Hello friends, today I am going to tell you use of may. When we use may, possibilities, permissions, hope and wish. Well, we use may when we want to ask permission and when we want to seek permission for formal permissions. For example, may I leave? May I borrow your pen? हम मे का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी से कुछ परमिशन लेना होती है या किसी से कुछ पूछना होता है, तब हम मे का यूज़ करते हैं. लेट्स टेक अ लुक see how may used when we talk about something possibilities. So for possibilities we use may. Something that you are not sure of, there are chances of it happening, we use may. For example, he may to stay with us. तो जब हम पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तब हम मे का यूज़ करते हैं. जैसे आज बारिश आ सकती है. It may rain today. Now let's see how may used when we wish something or give blessing to someone. May God bless you. May you be happy. Now you will write one sentence in comment box using may.